हेलो स्टूडेंट्स, टुडे योर टॉपिक इज दैट इज ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन की बात करें तो ये ऑर्गन है विच इज़ मेड ऑफ सॉफ्ट नर्व्स टिश्यू विच इज़ प्रेजेंट इन द cranium of the skull and mainly in case of vertebrates, and it acts as a coordinating center of the body. ह्यूमन ब्रेन की बात करें तो ये मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, मतलब द ब्रेन कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी परफॉर्म बाय द ऑर्गेनिज्म, और वी कैन से दैट ब्रेन that is regulates all the activities performed by the organism. So human brain की बात करें तो where it is present, so it is present in the cranium of the skull and it is mainly made of soft nerve tissue, a nerve cell. So human brain जो है it mainly consists of three parts, that is your forebrain, midbrain and hindbrain. So forebrain की बात करें तो forebrain जो है ये anterior part है brain का और ये mainly तीन पार्ट से बना हुआ है. First part is cerebrum, second is thalamus and third one is limbic system. So first अगर हम बात करें thalamus की, so thalamus जो है it is located above the thalamus is located above the, this is the region of the thalamus, so it is located above the brainstem and between the cerebral cortex and midbrain, and its function is to carry sensory information from the body of cerebrum and the limbic system. Then is hypothalamus and pituitary gland. Generally hypothalamus की बात करें तो ये लाई करता है अंडर थैलेमस एंड ये कनेक्ट करता है नर्व सिस्टम विद द एंडोक्राइन सिस्टम वाया पिट्यूटरी ग्लैंड. जनरली अगर हम बात करें तो इसके हाइपोथैलेमस हैज कैविटी, कैविटी को कहा जाता है थर्ड वेंट्रिकल, जिसमें प्रेजेंट होता है पी शेप्ड दैट इज ग्लैंड, जिसे हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है कंट्रोल करता है द सेक्रेशन ऑफ ऑल अदर ग्लैंड्स. सो व्हाट दिस लिम्बिक सिस्टम इज, लिम्बिक सिस्टम की बात करते हैं तो इट इज़ अ आर्क शेप्ड, दिस रीजन दिस वन, सो इट इज़ अ आर्क शेप्ड structure which lies between thalamus and cerebrum, or mainly it control response like hunger, fear, thirst, anger and sexual response, etc. Cerebrum, one of the most important part, it is the largest part of the brain as well as forebrain. So cerebrum is the largest part of brain as well as forebrain, and it is made up of two cerebral hemispheres, and these two cerebral hemispheres are connected with each other by corpus callosum. ठीक है, और these cerebral hemisphere communicate with each other via corpus callosum, and cerebral cortex is the outer region of the cerebrum. So cerebrum का outer region क्या बोलते हैं, that is cerebral cortex. Now function of cerebrum is it helps in movement, it controls speech, it is responsible for sensory processes, and it determines the intelligence of the, so it is a seat of intelligence, memory, willpower. ठीक है. So next is your midbrain. तो midbrain जो है it is located below the cerebral cortex and above the hindbrain, and ये control करता है reflex movements of the body and hearing reflexes. That is, it control vision reflexes as well as hearing reflexes, or simply it controls reflex movements. Hindbrain की बात करें, so it is present at the back side of the brain, and it also consists of three parts, that is cerebellum, pons and medulla oblongata. Okay, so here this is your cerebellum, this is the pons, and this one is medulla oblongata. This is your forebrain, that is cerebrum, mainly consists of cerebrum. This is your midbrain, and this is your hindbrain, consists of cerebellum, pons and medulla oblongata. So cerebellum की बात करें तो it is Latin for little brain. So इसे little brain भी कहा जाता है, और इसकी पोजीशन की बात करें तो it is located at the back side of head, and its function is to control the balance of the body and coordinate the voluntary movement of the body. So it mainly helps in that is, it maintains the equilibrium and posture of the body, and ये control करता है voluntary, of course, some voluntary movements of the body. Next is pons. Pons means bridge. So it is located above the medulla oblongata, and ये control करता है sleep as well as the rate and pattern of breathing. So mainly इसका it control the rate of breathing as well as sleep.
Next is your medulla oblongata. Medulla oblongata is the posterior part of the hindbrain or the brain, and it control autonomic action like breathing, heart rate, swallowing, blood circulation. मतलब it control involuntary functions of the body. Got it? So these are the different parts of brain and their functions. So next is your, that is synapse, or we use term synapses. Generally, मैंने आपको कल कहा कि दो नर्व सेल के बीच में there is a function junction between two nerve cell, that is the axon of one nerve cell and the dendroid of another nerve cell. There is a functional junction and the functional junction is known as synapse. So synapse को हम simply कह सकते हैं कि it is a functional junction between two nerve cells, and in this junction, in this synapse, the nerve impulse travels in chemical form. याद रखो, जो नर्व इम्पल्स है दो फॉर्म में ट्रैवल करता है. फर्स्ट इलेक्ट्रिक फॉर्म विद इन द नर्व सेल एंड केमिकल फॉर्म विद इन द साइनैप्स. ओके, सो नर्व सेल में जो नर्व इम्पल्स है वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में ट्रैवल करेगा, और साइनैप्स में जो नर्व इम्पल्स है वो केमिकल फॉर्म में ट्रैवल करेगा. सो नर्व इम्पल्स ट्रैवल्स इन टू फॉर्म, वन इज इलेक्ट्रिकल फॉर्म, अनदर इज chemical form. Got it? And the transfer of nerve impulse in chemical form through synapse, that is transfer of nerve impulse in chemical form through synapse from one nerve cell to another process को कहा जाता है synapses. So we talk about here, अगर इस स्ट्रक्चर को आप देखो तो दिस इज द एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन एंड डेंड्रॉइड ऑफ अनदर. सो द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन उसे बोला जाता है साइनैप्स, एंड ये स्पेशलाइज्ड जंक्शन है वेयर transmission of information takes place between a nerve fibers and another nerve fiber, muscle or gland cell. So ये एक specialized junction है जहाँ पर जो information होती है वो transfer होती है from one nerve cell to another, that is axon terminal of one nerve cell to the dendroid of another. It is not anatomically continuation. तो मैंने आपको बोला कि ये गैप एक्चुअली दो नर्व सेल की हम बात करें तो वो एक दूसरे के साथ कंटिन्यू नहीं है, देयर इज सम गैप इन बिटवीन देम, बट इट इज ओनली अ फिजियोलॉजिकल कंटिन्यूटी बिटवीन टू नर्व सेल. अगर हम साइनैप्स की बात करते हैं तो मेनली इट कंसिस्ट ऑफ प्री साइनेप्टिक एंडिंग दैट कंटेन न्यूरोट्रांसमीटर. दीज प्री साइनेप्टिक एंडिंग जो हैं एक्चुअली अगर हम ये कहें तो दीज आर प्रेजेंट ऑन द एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है. एंड दूसरा होता है पोस्ट साइनेप्टिक एंडिंग, और ये पोस्ट साइनेप्टिक एंडिंग जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, दैट इज डेंड्रॉइड्स में of another nerve cell. So presynaptic ending on the axon terminal and postsynaptic ending on the dendroid of another nerve cell. So presynaptic ending जो हैं ये कंटेन करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, याद रखो. और इन न्यूरोट्रांसमीटर का फंक्शन होता है ये नर्व इंपल्स को कन्वर्ट करते हैं केमिकल फॉर्म में. एंड दूसरा पोस्ट साइनेप्टिक एंडिंग की बात करें ये कंटेन करते हैं contain receptor site for neurotransmitter. So what they contain? They contain receptor sites जिन्हें हम बोलते हैं chemoreceptors for this neurotransmitter, जो उन chemical signals को attract करते हैं toward itself. The synaptic cleft or space between the pre and post synaptic ending, and it about 20 nanometer wide. So what is the function? The main function of synapses is to transmit the impulse, that is action potential from one neuron to another. So इसका function क्या है? ये transfer करता है nerve impulse from one nerve cell to another, and they allow integration, that is an impulse traveling down a neuron may reach the synapse which have served postsynaptic neuron or going to different location. The impulse can thus be displaced. This can work in a reverse where serve, that is impulse synapse. Therefore generally, for example, अगर मैं ये बात करूँ, this is the pre-synaptic cleft and this is the post-synaptic cleft, and this is pre-synaptic cleft मैंने बोला कहाँ पर present है, that is axon terminal पर, and post-synaptic cleft where it is present, is it present on the dendroids. This pre-synaptic cleft what it contain? Pre-synaptic cleft जो है ये contain करता है क्या, न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो कन्वर्ट करता है नर्व इम्पल्स जो पहले क्या किस फॉर्म में ट्रैवल कर रही थी, इलेक्ट्रिक फॉर्म में, किसमें, नर्व सेल में, तो वो उन नर्व इम्पल्स को कन्वर्ट करेगा केमिकल फॉर्म में. नाउ दिस केमिकल गेट डिफ्यूज्ड फ्रॉम प्री साइनेप्टिक क्लिफ्ट इनटू द साइनैप्स.
Okay, now from synapse, these chemicals are attracted by the receptors known as chemoreceptors, which are present in the postsynaptic cleft. So we can say that nerve impulse travels in two forms. One is electric form within the nerve cell and chemical form within the synapse. Got it? And mainly there is a unidirectional flow of nerve impulse, that is move only in one direction. Okay, so it's all about that is synapses and how nerve impulse travel. What are the various forms in which the nerve impulse travels from one nerve cell to another. Thank you.